So here question is prove that root 2 plus root 5 is an irrational number. अगर कोई भी दो रूट के वैल्यू इरेशनल वैल्यूज की एडिशन दी है वो भी इरेशनल होती है, हमें प्रूव करना होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दो सॉल्यूशन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होने की चांसेस है. सो यहाँ पे दोनों मेथड हम देखेंगे, दोनों मेथड से भी आपके फाइनल आंसर्स करेक्ट होने चाहिए. So here we have to assume that root 2 plus root 5 is a rational number such that root 2 plus root 5 is equal to a by b. Here procedure is same, but after that we have to change the steps. Suppose we are taking root 2 one side and root 5 one side. These two alternative steps are there. So case 1, here we can mention case 1. In case 1 we can define root 2 is equal to a by b minus root 5. When we take square on both sides, take square on both side, at that time we get root 2 square is equal to a by b minus root 5 bracket square. So we know that a minus b bracket square is equal to a square plus b square minus 2ab. This identity we have to use for this one. So root 2 square is 2 is equal to this identity a minus b bracket square is equal to a square plus b square minus 2ab. So a by b square, a square by b square plus root 5 square can be written as 5 square minus 2ab. So minus 2a by b into root 5 we have to define. Yes. So now we have to keep this root 5 to one side and shift all the terms to the left side. So we get, or instead of this we can shift negative sign, this negative value to positive side. So we get 2a by b into root 5. It is equal to a square by b square plus 5 minus this plus 2 shifted to this side minus 2. So here we get 2a by b into root 5 is equal to a square by b square plus 3. We do the cross multiplication and this term is shifted to another side. So it implies that root 5 is equal to a square plus 3b square. When we do the cross multiplication, 3b square, and in the denominator b square as it is, and this multiplication and this fraction is shifted on the other side, we have to write the reciprocal. Reciprocal can be written as b by 2a. So this b and square will get cancelled, so it will get root 5 is equal to a square plus 3b square divided by 2ab. And here we get irrational is not equal to rational, but here we get contradiction. Contradiction we have to define. बट इसके लिए और एक अल्टरनेटिव मेथड है. या तो आपका सॉल्यूशन ये होना चाहिए रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और रूट 2 इज इक्वल टू ऐसी एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी. इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखते हैं केस 2. So in case 2 we need to keep root 5 on one side. Here we have to keep root 2 to the left side. Here we can take root 5 to the left side. So root 5 is equal to a by b. This plus 2 is shifted to one side, it will becomes minus root 2. Same as it is, take square on both side. Take square on both side. So we get root 5 square as a 5. I can write directly now. So a by b bracket square means a square by b square plus root 2 square 2 minus 2 into a by b into root 2. A square plus b square minus 2ab, that identity, same identity I have used here. So again it can be written as this minus sign will be shifted to another side. 2a by b into root 2, it is equal to a square by b square plus 2 minus 5. This plus 5 is shifted to another side. ये ट्रांसपोजिशन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ट्रांसपोजिशन के लिए प्रैक्टिस करोगे तो इसके ट्रांसपोजिशन इजीली आपको आएंगे. सो इट इज इक्वल टू, सो वी हैव टू राइट वन मोर स्टेप, 2a by b into root 2 is equal to, we do the cross multiplication, a square 2 minus 5 is minus 3 into b minus 3b square divided by b square,
and this fraction is shifted to another side. It we have to write in the reciprocal form. A square minus 3b square divided by b square into this fraction is shifted to another side, therefore it becomes 2a by b becomes b by 2a. b and b square will get cancelled, therefore root 2 is equal to a square minus 3b square divided by 2ab. Yes, these two cases we have to follow. Yes, so आप इसमें से कोई भी एक केस भी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हो तो आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे उसके. सो रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab और रूट 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab डिफाइन करो एंड देन यू हैव टू राइट hence we get contradiction. Hence we get contradiction. Therefore root 2 plus root 5 is an irrational number. You have to define is an irrational number, hence proved. Here we get the proof. So इसी तरीके से अगर आपको दो irrational values के एडिशन पूछिए, सब्ट्रैक्शन पूछिए, मेथड सेम फॉलो करनी है. रूट 2 प्लस रूट 5, या तो रूट 2 को सिंगल डिफाइन कर सकते हो या तो रूट 5 को डिफाइन करोगे. अगर आप रूट 2 को सिंगल डिफाइन करते हो तो आपको अनदर रूट वैल्यू रूट 5 के फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा. और अगर आप रूट 5 को रैशनल सिंगल डिफाइन करते हो तो रूट 2 की वैल्यू मिलेगी. ये वैल्यूज इक्वल आना बहुत जरूरी है. या तो आपका इस फॉर्म में सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर केस 2 के फॉर्म होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन लेकर आप आउट ऑफ मार्क ले सकते हो इस क्वेश्चन में.